A pleasant evening to all of you. I, CA Kalpana Thakur, welcome you all on our 43rd episode of Friday Fleet, an initiative of women empowerment. It gives me immense pleasure to announce that we are having respected CA Dr. Rajkumar Adukia sir right with us in this session, and our co-founder CA Poonam Pathak, who is our today's speaker, who is sharing her insight and, to be very precise, her experience of gaining the followers. We have mentioned in the message that we have circulated 26,000 plus and millions expression on her post. When we talk about any of the field, being a chartered accountant in practice, or you are a trainer or a business personnel, wherever the field you choose, in today's era, we need that visibility. And how to gain that visibility, we are going to hear none other than our very own CA Poonam Pathak. Without taking much time, because all of us are here to listen to our speaker, I'll hand over the stage to CA Harshali Salvi to introduce our speaker for the day. Thank you so much. Harshali, over to you. Thank you, Kalpana ma'am. It is my honor to introduce our esteemed speaker for today's session, CA Poonam Pathak ma'am. She is highly accomplished chartered accountant with over 8 years of experience in taxation, company law, and financial consulting. Ma'am influence in the financial community which was recognized when she was honored as one of the top 40 finfluencer of 2014 by the FTLD-ICI. It is a remarkable achievement that reflects her leadership and impact in the industry. She is not only a chartered accountant, but also an IICA qualified independent director. She holds multiple certifications, which includes FAFD certification in anti-money laundering, corporate social responsibility, and also in a business responsibility and sustainability reporting. She is also a certified NLP practitioner and an advanced level financial goal planner. This shows her deep knowledge and commitment to staying at the top of her field. Beyond her professional expertise, she has also co-authored a book on prevention of sexual harassment published by the ICAI, the contribution to the creation of safer and more inclusive workplace. She once gained experience in the cybersecurity through an internship with the cyber cell of Gurgaon Police, which gives her unique edge in handling modern financial challenges. Beyond her professional life, Ma'am is a fitness enthusiast and a passionate marathon runner. Her dedication to fitness reflects her drive and discipline in both personal and professional life. We are really fortunate to have her with us today to share her insight on visibility to credibility, mastering the personal branding, which help every one of us who are attending today's session to create a personal brand. Please join us welcoming CA Poonam Pathak ma'am. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you so much, Harsali, for your wonderful words for me. I'm really grateful for this. And thank you, founder of Friday Fleet, Kalpana, for giving me this opportunity. And my mentor, sir, is here. I have learned a lot of things from sir. And I want to start from this only, how this all, this LinkedIn journey or personal branding journey, social media usages started. So I received an email from sir, and I called him. Like, there is a number if you need guidance. And at that time, my daughter was around 1 year, and I was thinking like I'm not having time. All the time I'm thinking, like, as in lot of newly mothers think like I don't have time, I don't have time. And I called sir that these are the things, and what is the problem I'm facing, and he guided me. And so this is
till then I have never met him. So the usage of the social media, this the email and that virtual connection, I'm able to gain lot of expertise from him, a lot of guidance, and which helped me to manage that time, to come from that framework which I'm from, I think from 3 or 4 months, and not utilizing the time. I have the resources, but I was not utilizing those resources. Similarly, then when did this Friday Fleet started, and with Kalpana, I connected through the virtual mode only by using this uh, Zoom platform and all. And through this Friday Fleet, we all connected. Harshali connected, lot of other connected. So what we need to understand that if we want to do something, now stepping out from the home and meeting physically, offline mode is not a requirement nowadays. There are a lot of virtual modes available, and we can create lot of things we can have. That is there is in NLP practitioner certificate that also I have done online only, and sir told me about that certification also, so I connected with the Pavan sir, and I did that online. So what we have some of the limiting belief, and when I mentor females, because I have that uh, inner calling to guide them, and what situation I have been from my experience, if I can help them, so I keep connecting, keep interacting, and we have a community also for the females. So what I found that we have created some kind of limiting beliefs for ourselves, which actually not existing. We are thinking that until we are not stepping out, until we are not meeting people, things will not work out. So whatever, like you are reading my profile, so lot of things I got through the social media only. I was recognized as the finfluencer because I'm quite active on different platforms. So here I want to share how anyone can start their journey of social media, how they can create a personal brand for themselves. Also, there's a topic when I was choosing, so in my mind came that from visibility to credibility, like visibility is what we want to be seen, we wanted to be known, people know us, so that is the visibility. But from that side of the visibility, people knows you, उसके beyond जाके people are trusting you. So whenever it comes कि I want to find some GST expert and there is the name clicks. So may I ask, if I'm asking a GST expert, what is the name is coming in your mind? Can you write? Anyone? Similarly, from income tax. So different like fields we are having, and in case of Greece, so Kalpana answered that Tarjini and Greece Ahuja sir. So how we come to know that these people are expert? Because Greece sir in income tax, Sapna also mentioned, because sir is keep taking the sessions, he keep speaking about that subject. So when one person is starts talking about that subject, then people knows, okay, this is the person who is expert in this subject. So to be known as a expert, to be known as a thought leader of that field, you are writing about it, you are talking about it. So earlier we used to have take sessions from the offline mode only. Now there are a lot of platform available, webinars, book writing, ebook writing, so that you can do and you can be known as an expert. So from that visibility to the credibility, when people start trusting you, how that journey goes. So I want to share my PPT also here. Just a minute. So anyone who wants to start their journey of personal branding,
First of all, you need to identify, you need to ask yourself why you want to do this. What is the purpose of this? There is lot of purpose of becoming a social media person, because different kind of content being consumed and being shared by uh, content creator. So one is entertainment. You might have seen lot of reels, lot of content that is just for the entertainment purpose. Some are for teaching purpose, knowledge sharing purpose. Some may be uh, for educational purpose. So what is your purpose of being on social media? So if we think that we are the professionals, uh, we are chartered accountants and other professionals, so what we want to use social media is like whatever the knowledge we are having, what the expertise we are having, we can share on the social media. So that can be one of the purpose of being there. So asking yourself, like when I started in around 2019 or 20 something, I have written which platforms I want to use, because there is, I will be sharing in the later slide which are the platforms are there. Also, I have written what are my goals, what are my targets. So I have written that I want to reach on LinkedIn 30,000 followers, and also on the on the Facebook and all. So knowing that, understanding or writing, because there is lot of power in writing. When you are writing, your mind is uh, taking it as a seriously, because somewhere it is now in the physical form. Until you are just thinking, you are just having that in your mind, so that is in the thoughts only. Once you have written, so that becomes a thing, that is a something where it's physical, and you start taking that seriously. So in that way, I have made on Excel only, I have made a whole kind of a you can say a calendar, how what will be the frequency. So a basic preparation you can do. Now with using social media for almost 5 years or something, I have gone in lot of details. So now I have a folder. It's not only Excel, but I have a folder for Facebook, what I want to do, for LinkedIn, what I want to do, what will be the frequency of my posting, and what kind of things I want to share. Because whatever I am doing in my life, I was talking with one of my mentee, and I said, because whatever you see on the social media, that is not the whole life of any person. Someone is choosing what they wanted to others to be seen. So that you can decide, you want to put your personal life there or not, whether you want to share only whatever the professionally you are doing. So someone is in public speaking, their why can be they want to share whatever the events they are doing, where they are speaking, or on the what topic they are speaking. So in that way, other people around them, they came to know, okay, this is the person who speaks in this topic. So later on, if they want to invite you, they will come to know and they will have in their mind. So Kalpana has written about the Tarjini. So she is consistently writes on LinkedIn on the GST. So in that way, we come to know that she is expert in GST. So if any time we are looking for someone who can speak on GST, definitely we will try to connect with her. So in that way, your profile, your work will increase. Then the other thing is mindset shift is many people think that this is not something serious. Like जैसे कि social media जहाँ पर बात आती है, they are like कि ये तो इस टाइम पास के लिए है, या हम हमारे टाइम को इसमें वेस्ट करेंगे, या उसको इतना ज्यादा मतलब सीरियस नहीं लेते हैं. लेकिन आज के टाइम में जहाँ पर डिजिटल इतना ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, इतने ज्यादा कंज्यूमर हैं, आई हैव नॉट टेकन द डेटा राइट नाउ, बट globally there are so many on the Facebook. I think many of us are available on the LinkedIn. Many of us are available there. We are using LinkedIn. So if you are getting that kind of platform, you are getting that kind of access where you can connect a person from the other side of globe as well. So
one of my good friend is from the South Africa, who is a part of All India this group also. So she lives in South Africa. We met only once in the this World Congress, and now through the LinkedIn, because I likes her post, she likes mine post, and somewhere if we keep seeing one person continuously through the any status or through any post, that becomes a kind of a connect. So it's not only in India you are having your connect or any particular city, but you can have your connect in maybe in all India or maybe globally as well. So that kind of reach these platforms are giving you. This is not something which is just for like you have to start taking it seriously, like you are taking other businesses, you are taking other classes. Is similarly importance if you are giving to social media, that can be a particular 1 hour or 30 minutes of your day, and in that 30 minutes you have that kind of uh, strategies, that kind of focus. Okay, what I want to do, I will not be doing scrolling, and then scrolling takes a lot of time, so you have that kind of discipline as well, that I will not waste my time in this thing. So I'm posting here, then I'm engaging with other people's content. So these kind of strategy with the focus mind, if you have, then this is not a time waste for you. So here is one question I want to ask to our participants. How many of you are attending events that may be offline, online? How many of are you actively participating in events? And I'm assuming that most of your attending are the professionals. So if anybody from some other field also, then please let me know in the message. So I will change my content or my speech accordingly, because for everyone, social media have something else. It is something which can be used for different kind of different purposes. We can use it. So Sapna ji has written that sometimes he's attending, and Dheeraj ji is saying that I attend seminars conducted by ICI. Shruti saying these days due to small kids, but now I have to be regular. Okay. So why I am asking this question? So that Shruti, you have written that you are not attending, you have a small kid, but with a small kid, offline events you can attend. Also, Mamta ji is saying that I'm mostly a listener. So until you are just listening, people will not know that you are there in the sessions. That may be offline or that may be online also. So there are, I think, 16 or something people are there, and out of that, only 2 or 3 are engaging. If more people are there who are listening and they are engaging as well, other members will be knowing that okay, one Mamita is here, and later on after the sessions, another member can connect to you. So these events, participating in offline, in online, everything keeps adding in your life. We think okay, okay, we are attending only this session. This may not be of that much use, but each and everything is adding something in your personal branding. If you are just a listener, you will not get much about it. If you are contributing, you are active there, something you will get in your events. And also I keep attending lot of events from ICI also, other industry also. So in that way you got opportunity to connect lot of people. So this become an engage one of the part of using personal, how you can personal brand yourself.
So one person who keep attending the events, other members also knows कि okay ये तो आने वाले हैं. So धीरे धीरे slowly they start giving opportunities कि okay she will come, she is regular. आप moderator बनोगे क्या? Okay, you want to speak on some session. So in that way also we can get lot of opportunity. Getana ji saying that she is attending with like the spiritual or life coaching something. So you might be knowing lot of people from that industry. So how many of us are the digitally active on social media? Not as a consumer, maybe as a consumer, most of, matlab, like many of us may be there, but how many are digitally active as a content creator, as a sharing something? How many of actually having like accounts on LinkedIn? How many of us? So, like Tanaji has written that she is a purpose coach and energy healer through because she is sharing, we come to know about her, and later on we can connect to her on this topic. So, what you are doing, speaking about, is very much important, and that is I have written in the later slide as well. Dheeraj is and active on LinkedIn and other platforms as well. So other members who are not active on any of the social media, I request you to have your account, and what can be the purpose and something we will be like discussing in the later slides. But being digitally active means you are sharing the content. You are not a consumer. If you are only the consumer, that much you can't get from these platforms. Are we networking well? When I'm asking networking well, what does it mean? Okay, she is writing that she is a super teen coach active on YouTube and FB. We will connect with you as well. So, when I'm asking about the networking, some people won't understand about the networking that we are going in any event and that hi and hello and something kind of things, and it's the networking. No, networking means you are connecting with the right audience, like whatever the work you are doing, what is your purpose, and you are expert in that field or whom you want to reach. If you have that kind of focus in your mind. Yes, right, Shruti. Your network is your net worth. And when you are networking with the right people, so that is also very important becomes. And if we are attending any event, I request everyone to try to meet. If you are going in any event and there are like today only, if we can try to connect with these members who are joining this event after the event. You are sending them messages, connecting with them. So if you are giving 1 hour here, 10 connects, maybe 15 connects, you are getting from this 1 hour of your investments. And later on, you don't know when these connects can help you in your personal life as well, maybe in your professional life as well. Similarly, if you are going in any offline event, so what I have seen from my experience, many members are coming, they are sitting, they are listening the speaker, attending the event, and then just left. So what you are coming with, you are coming with after that event, you are coming with some of the knowledge, like whatever the speaker have shared, but what the connects you are taking from there. So some of members connects with the organizer, 1 or 2%, but nobody is stopping you. You can go in the event, or and you can carry your cards always with, or like if there are 50 members, if there are 40, you can try to connect at least 50% people from there, and
take their cards as well. And after coming from the event, you can send a message, a personalized message. It's nice meeting with you. You can say my number and this is my profile. So what I used to do, I used to share about me, what I am doing, where I am located. So in that way, maybe if I'm meeting with uh, 30, 40 people in a week, so I may not be connected with each and everyone. They are just the number in my phone book. But out of them, at least 10% maybe who are now, I know them personally, they know me personally. And for any work, we can connect, we can share the knowledge. So lot of opportunities can be created through our network. So this, like, we can discuss later on also, like there are a lot of platforms, Facebook, LinkedIn. So according to your work, according to what you want to do, right, being on the right platform is very much important. So I just want to summarize, like on the LinkedIn, professionals are there. On the Facebook, I don't find that much professional conversations, and there is more of the personal events, like what is going into the personal event. So if you want to generate your work, you want to generate leads, clients from there, maybe Facebook can't help you much, LinkedIn will help you. So, and if you want to create reels, then the Instagram is the platform where you can get good reach. On LinkedIn, recently they started sharing videos also, and I found that also useful. One of my reel got 7 lakh views on LinkedIn. So they recently added this feature 2, 3 months back. I think in October or something. You can share your videos on LinkedIn as well. But what is generally preferable is Instagram. So this, whenever you are choosing that, okay, I want to now be consistent on social media, and this is something like I want to know people that I am expert in GST. I will be sharing my content on GST. So choosing the right platform, then going forward will help you a lot. And this I have discussed, engaging with your audience. Networking doesn't mean you are meeting how many people, but are these your audience? Are you looking for those people? So that is also becomes important. So let's go and discuss more about the networking. So others will know about you, what you are doing, and who you are as a person through your content you are sharing, and whatever the knowledge, whatever happening in your life, you are putting on the social media through that only. So we very much clear about it when you are starting it. We very much clear that what you want to put on the social media. So that can create your image, and that can like damage also your image if you are putting content which is not aligning with your purpose. So if someone is an expert in income tax, okay, and they are not talking much about income tax, rather than they are talking about any other thing. So the lot, like, there are people who are talking on the social events. Okay, so when you are talking what is happening, like धनश्री और चहल का डाइवोर्स हो रहा है and ये हो रहा है, so उस पर भी लोग बात करते हैं. बट वो क्यों होता है, वो डिस्कशंस होते हैं टू गेट द व्यूज कि रिसेंटली क्या चल रहा है, और लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, और उससे उनको कंटेंट, वो कंटेंट से व्यूज मिलेंगे उनको, और वो व्यूज को यूज करके दे माइट बी डूइंग समथिंग एल्स. लाइक जो कि पॉडकास्ट कर रहे हैं, उनको व्यूज चाहिए जिससे कि उनके पास ऑडियंस आए. तो वो सारी चीजों को करने के लिए रिसेंटली क्या हो रहा है, लाइक मेरे, जब मैं डिसाइड कर रही थी कि मैं मेरी लाइफ में क्या चाहती हूँ, लाइक मैं क्या, लाइक व्हाट आई वांट टू डू, तो मेरा से आ रहा था कि हु आई एम, लाइक क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करती हूँ. तो
मैं किसी एक टॉपिक पे खुद को करना चाहती हूँ, व्हाट इज माय पर्पस, सो देन आई थॉट कि नहीं, मैं किसी एक टॉपिक पे नहीं, मतलब माय सोशल मीडिया अकाउंट कैन नॉट बी लाइक आई एम टॉकिंग ओनली ऑन वन टॉपिक, बिकॉज दीज आर द 3-4 टॉपिक्स आई वांट टू टॉक। लाइक मैंने डिसाइड किया कि मुझे एनएलपी, सेल्फ डेवलपमेंट और इसमें भी इंटरेस्ट है, तो आई विल बी राइटिंग अबाउट इट। आई विल बी राइटिंग अबाउट वॉट एवर, लाइक मुझे इंस्टीट्यूट से बहुत एक अटैचमेंट है, तो रिसेंटली क्या चल रहा है, कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, वो मैं शेयर करूंगी वुमेन्स के लिए, या फिर पेरेंटिंग में बी वन ऑफ द थिंग, तो मैं लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ, अदर फीमेल्स को, तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो ये सारे कंटेंट क्योंकि मैं बना रही हूँ, तो ये सारे कॉन्टिन्यूसली लोगों ने जो कंज्यूम किया है, उन्होंने मेरे बारे में की इमेज बनाई हुई है, उसको क्रिएट, मतलब लाइक उस कंटेंट को कंज्यूम करके। जब जो स्टॉक्स पे मुझे जाना था, वहां मुझे मेरी स्टोरी शेयर करनी थी, देन आई आस्क्ड माई सेल्फ व्हाट इज इट, क्यों जाना है मुझे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोइंग देयर, सो दैट मे बी कि अदर फीमेल्स कैन कम आउट फ्रॉम द सिचुएशंस। अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि ओके, दीज आर द थिंग्स, मैं थोड़ा इसमें, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, आई कैन शेयर विद द अदर। तो वहां पे जाने का एक मेरा ये भी हुआ कि नाउ पीपल नोज अबाउट माय स्टोरी, व्हाट इज माय चाइल्डहुड इज। अगर मैंने वो शेयर नहीं किया होता सोशल मीडिया पे, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि देर जस्ट नो कि ओके पूनम पाठक। बट वंस आई चूज कि मैं ये सोशल मीडिया पे डालने वाली हूँ, बिकॉज देन देर इज नो पुटिंग बैक, कि अभी मैं बोलूँ कि मेरा डिलीट कर दो आप वहां से, तो वो डिलीट करना या लोगों के माइंड से वापस नहीं आप ले सकते हो कि वंस समबडी हैज वॉच्ड इट, दे हैव कंज्यूम इट, नहीं सके ओके आप भूल जाओ इसको, आप फॉरगेट कर दो, सो वो नहीं होता है। सो वॉट एवर यू आर पुटिंग ऑन सोशल मीडिया, आप उतना मतलब लाइक यू हैव टू बी लिटिल बिट ऑफ कॉन्शियस कि ओके दिस इज द इमेज आई एम गोइंग टू बिल्ड फॉर माई सेल्फ। और जो भी आप शेयर करोगे कॉन्टिन्यूसली, लाइक मैं फिटनेस पे बहुत डालती हूँ, तो लोगों को पता है कि सी इज अ फिटनेस एंथुजियास्ट। मैं जब जाती हूँ तो लोग समटाइम्स मेरे काम से ज्यादा या सीए से ज्यादा बोलते हैं कि अरे तुम तो डिनर नहीं खाओगे, तुम तो ये नहीं खाओगे, बिकॉज तुम तो रनिंग करते हो, ये करते हो, तो they have created that kind of image. So now you can understand कि any image you want to create for yourself, by continuously consistently talking about that subject, you can create for yourself। and then अगर किसी को भी लाइक रीच आउट करना होगा कि ओके दिस, वेयर इज दैट पर्सन, ये एक्सपर्ट कहाँ पे है इस टॉपिक का, योर नेम विल बी देयर। the only thing how much efforts you are talking, like taking on talking, writing and spreading awareness about that subject। एंड वन लाइन आई एडेड हियर दैट, कुछ लोगों के माइंड में से था कि मैं मेरे बारे में कैसे बात करूं, इज इट नॉट कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो आई हैव लाइक रेड बुक्स ऑल्सो ऑन दिस टॉपिक, एंड देर इज लाइक कि वो बोस्टिंग नहीं है, इट्स जस्ट कि आप अपने बारे में जो हो वही बता रहे हो। बोस्टिंग इज अबाउट कि आप ना बढ़ा बढ़ा के बता रहे हो कि मेरा तो इतना है, मैं तो ये है। जब आपका जो एक्चुअल में आप नहीं हो, जो आपने एक्चुअल में नहीं किया, जब उसको आप बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कुछ दिखाने की लोगों को कोशिश कर रहे हो, दैट इज बोस्टिंग। बट हु यू आर ऑथेंटिकली, आप वही सोशल मीडिया पे लेके जा रहे हो, सो दैट्स नॉट अ ब्रैगिंग, बोस्टिंग, इट्स जस्ट मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। एंड एज ए ह्यूमन बींग इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एटलीस्ट अपने बारे में बात करें। हम खुद ही अपने बारे में बात नहीं करेंगे तो हु विल एल्स टू। लाइक जैसे हम जब हीलिंग के सेशंस लेते हैं या अदर सेशंस लेते हैं, लाइक कि आप खुद ही अपने को अप्रेज नहीं करोगे, आपको एक सिखाया जाता है कि यू जस्ट डू फॉर योर सेल्फ, दैट यू हैव डन गुड। तो सिमिलरली आप जो काम कर रहे हो एक्चुअल में वही सोशल मीडिया पे पुट कर रहे हो, देन देर इज नथिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड देन पर्सनल ब्रांडिंग और नेटवर्किंग, इसके बारे में हम साथ में ही क्यों बात करते हैं, क्योंकि काफी इंटरलिंक्ड है। मैंने जितना इस टॉपिक पे रीड किया, समझा, तो वो ना बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। लाइक जैसे लाइक कल्पना है, तो इफ सी इज अ हैव अ गुड नेटवर्क, 10,000 पीपल नोज यू, सो तो आपका एक पर्सनल ब्रांड ऑलरेडी हो गया कि 10,000 लोग आपको जानते हैं। तो दैट इज क्रिएटिंग योर पर्सनल ब्रांड। इसी का ही अगर हम ऑपोजिट में जाते हैं कि पर्सनल ब्रांड है किसी का, तो उसका नेटवर्क अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग उसको जानते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एक नेटवर्क आपका क्रिएट हो जाता है। मेरे केस व्हाट आई स्टार्टेड, मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं पहले
पोस्ट करना स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड पोस्टिंग फर्स्ट, लाइक ब्रांडिंग पहले स्टार्ट की मैंने। तो वो ब्रांडिंग स्टार्ट करने से मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे कि जो मेरे कंटेंट में जो लिखती हूँ उसको कंज्यूम करते हैं, तो फिर वो आपको डीएम में रीच आउट करेंगे कि वी वांट टू कनेक्ट विद यू। फिर आप उनके साथ में कनेक्ट करते जाते हो। जैसे मैंने जो स्टॉक्स पे मैं गई, आई हैव शेयर्ड माई स्टोरी देयर, तो मुझे वहां से मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ, कि बहुत लोगों ने वो वीडियोस को देखा एंड दे थॉट कि मुझे पूनम से कनेक्ट करना है। मुझे बहुत सारे सीनियर्स मुझे कनेक्ट हुए, क्योंकि उन लोगों ने मेरी स्टोरी को देखा हुआ था। देन दे रीच्ड आउट टू मी इन द डीएम्स ऑफ लिंक फेसबुक एंड लिंक्डइन, दैट पूनम वी वांट टू टॉक विद यू, वी वांट टू कनेक्ट। एंड फिर मैं जैसे किसी के, तो फिर मुझे एक सेशन का भी फेसबुक से ही आया कि क्योंकि तुम हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा तुम्हारे पोस्ट आते हैं, विल यू बी टेकिंग अ सेशन ऑन द हेल्थ। तो मेरा नेटवर्क क्रिएट बाद में हुआ। पहले मैं पर्सनल ब्रांडिंग कर रही थी, बट दैट इज समवेयर इंटरकनेक्टेड, कि अगर आपका पर्सनल ब्रांड पे आप कर्म करोगे तो आपका नेटवर्किंग अच्छा हो ही जाएगा। आपका एक नेटवर्क जो है वो एक अच्छा ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाएगा। जहाँ जब मैं अभी लोगों से पूछ रही थी, तो काफी लोगों का ये आ रहा था कि कंसिस्टेंसी नहीं है, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाते हैं जब आप सोशल मीडिया को यूज करना चाहते हो। यू शुड बी ऑथेंटिक, जो है वही बोल रहे हो। क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि पर्सनल ब्रांड आपका क्रिएट भी होता है और डैमेज भी होता है। इफ यू आर नॉट ऑथेंटिक, so that can be a damaging part for you. Another thing being consistent. कंसिस्टेंट होने के लिए मेक अ सोशल मीडिया कैलेंडर। मैंने अभी तो चैट जीपीटी है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट ऑन द चैट जीपीटी, आई वांट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ माय इमेज, लाइक इनकम टैक्स एक्सपर्ट, आई वांट टू स्पीक ऑन पॉश, या फिर मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ ऑन दिस काइंड ऑफ टॉपिक, मैं सेल्फ डेवलपमेंट पे बात करता हूँ। गिव मी अ कैलेंडर जिसको मैं सोशल मीडिया में कैसे यूज करूँ। सो दे विल गिव यू फ्रीक्वेंसी, दे विल गिव यू टाइमिंग। एंड इफ यू आर राइटिंग लाइक आई एम यूजिंग these kind of things, like I want to talk on this subject, give me the right timing to share my post. So chat gpt will give you that timing as well, कि आप अगर इस टाइम में यू पोस्ट करोगे तो लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं इन द इवनिंग टाइम। सो 8 to 9, between 8 to 10, where when people are traveling for their work, they are more engaging on the social medias. Also similarly, if they are like coming back, so whenever they are traveling, देर आर चांसेस कि सोशल मीडिया को ज्यादा यूज करेंगे, तो आपका पोस्ट अगर उस टाइम में आता है तो हायर चांसेस है कि विजिबिलिटी अच्छी होगी इस पोस्ट की। तो अभी हम व्हाट वी कैन डू, वी कैंट सिट एंड वेट फॉर कि अरे 8 AM पर ही पोस्ट करना है। सो देर इज अ ऑप्शन इन लिंक्डइन आई एम यूजिंग टू शेड्यूल आवर पोस्ट। सो आई हैव रिटन एंड sometime I write for 2-3 posts, I write for a week and schedule it, so that will go accordingly on the timings or on the days. So if you are writing 3 days in a week, that is sufficient, that will give you a visibility. So on Sunday you sit, okay, these 3 topics I want to speak, write a post and schedule on LinkedIn if you want to use the LinkedIn. Similarly, for Facebook also, Facebook I think I have not used schedule, but on LinkedIn I am using it. You can schedule your post for a whole week. And visibility means like the more you will be consistent and engaging with other people, so then you will get your visibility, not only by the posting but also through engaging with other creators content. You keep writing and that also will give you visibility and value proposition. Whatever you are writing, whatever you are sharing, that is adding some kind of value to person's life, they will definitely connect with you. लाइक हम अपनी तरफ से ही सोच सकते हैं, अगर हमने किसी के 10 पोस्ट पढ़े हैं और लगा कि हाँ ये तो सही है, ये तो मेरे जैसे ही बात कर रहा है, मेरे टाइप का, ये तो एक आता है नहीं कि इस पर्सन से कनेक्ट करते हैं, मे बी मुझे यूजफुल हो सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग से एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी क्रिएट होती है। लाइक अगर आप किसी के बारे में कॉन्टिन्यूअसली सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हो, जान रहे हो उसके बारे में, तो आप एक उस पर्सन को पहचानने लगते हो।
तो एक आपका क्रेडिबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, नेटवर्किंग और अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव डिस्कस्ड, कैरियर फ्लेक्सिबिलिटी। सो सम इफ यू आर नॉट एबल टू लाइक, बहुत सारे जो विद द स्मॉल किड्स फीमेल्स हैं एंड दे डोंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी की वो बाहर निकल सके, फुल टाइम कर सके, तो आपको सोशल मीडिया से बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। कंटेंट राइटिंग में भी बहुत लोग करते हैं, बुक पब्लिशिंग करते हैं, तो वो सारे काम आप कर रहे हो आपके घर से ही, और उसको प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो। तो काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और मैं इसको और अच्छे से इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में 70% जो भी अपॉर्चुनिटीज आए हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया ओनली। मुझे इवन मेरा सीए का प्रैक्टिस का भी जो वर्क है बहुत सारा सोशल मीडिया से ही क्रिएट हुआ है। लाइक स्टार्टिंग में जब आप आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, यू नीड दैट 100 क्लाइंट्स, कि आपके 100 क्लाइंट्स होने चाहिए जो कि मल्टीप्लायर इफेक्ट फिर चले कि 200, 400, 800। तो स्टार्टिंग के जो 100 क्लाइंट्स आपको जनरेट करने होते हैं, तो आउट ऑफ दोज मे बी 50 or 60% आई गॉट फ्रॉम सोशल मीडिया ओनली। So that kind of opportunity, that kind of work you can get if you are consistent and creating a good personal brand for yourself. Like in my case, I'm using LinkedIn. So there is other feature. We can have a Kalpana, we can have a proper LinkedIn session also later on, like how we can use LinkedIn properly, because today we are talking on lot of things, यूसेज, सोशल मीडिया एंड ऑल। तो लिंक्डइन में एक फीचर है कि लोग आपको रिकमेंडेशन दे सकते हैं, एंड आई आस्क्ड फॉर द रिकमेंडेशन जिन लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ। सो थ्रो दैट ऑल्सो, अगर आपके पेज पे बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं तो दैट गिव्स यू अ गुड विजिबिलिटी एज वेल एंड एक्सपर्टीज। लाइक जब लोग आपके एक बार प्रोफाइल को गो थ्रू किया एंड दे हैव सीन कि 10 लोगों ने बोला है कि पूनम इज गुड इन इनकम टैक्स, तो उनके माइंड में एक आएगा कि अच्छा ये इनकम टैक्स का अच्छा काम कर सकती है, तो वी कैन लाइक डिपेंड ऑन हर। मतलब मैं खुद के बारे में मैं खुद बोल रही हूँ और 10 लोग और मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो मेरी वैल्यू एडिशन वो होगा मेरी प्रोफाइल के लिए। So that kind of things can be done through usage of, I'm talking much about the LinkedIn, क्योंकि प्रोफेशनल्स के लिए वो काफ़ी यूजफुल है। इवन ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, रील्स को अगर इनकम टैक्स पे या फिर जीएसटी, मतलब किसी भी टॉपिक पे आप कॉन्टिन्यूसली रील्स बना के डालते हो ना, वो भी आपके काम को काफ़ी बढ़ाता है। मैंने मतलब ऐसे बहुत लोगों के साथ में इंगेज हुई हूँ, और एक कोई रील कभी उनका वर्क कर गया एंड दे गॉट लॉट ऑफ फॉलोअर्स, और वहां से काफी लीड्स जनरेट हुए हैं। सो दीज आर द प्लेटफॉर्म्स जो सोशल मीडिया में हम यूज कर सकते हैं। फेसबुक में मोस्टली रहता है पर्सनल कनेक्शन के लिए, लेकिन पर्सनल कनेक्शन में भी आप लाइक लीडर्स से कनेक्ट हो सकते हो। हमारे प्रोफेशन के जो लीडर्स हैं, जो भी सीनियर्स हैं, वो आपके काम को देखेंगे, वो भी आपको कनेक्ट करेंगे, वो भी आपको इनवाइट करेंगे। एंड लिंक्डइन प्रोफेशनल्स यूसेज के लिए ज़्यादा है। इंस्टाग्राम पर आप रील्स ज़्यादा बना सकते हो। ट्विटर इज मोस्टली यूज फॉर इफ यू वांट टू रेज अ वॉइस अबाउट समथिंग। देन कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिन्होंने ट्विटर से ही अपना एक बहुत अच्छा पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया हुआ है, लाइक अभिषेक राजा राम जी। काफ़ी लोग शायद उनको यहाँ पर जानते होंगे, वो जीएसटी के बारे में काफ़ी बात करते हैं। तो और चिराग चौहान, ही इज क्वाइट एक्टिव ऑन ट्विटर। तो इस तरीके का, जब व्हेन यू वांट टू वॉइस आउट, लाइक हमारा भी कभी कोई मैटर बहुत नहीं हो रहा तो लाइक कि ट्विटर पे डाल दो और टैग द डिपार्टमेंट कि हमें ये वाला इशू आ रहा है। तो इफ यू वांट टू स्पीक, यू वांट टू वॉइस आउट ऑन एनी टॉपिक, ट्विटर इज अ गुड प्लेटफॉर्म जो आपको उस रेज करने के लिए, एक मूवमेंट काइंड ऑफ थिंग हो गया, तो ट्विटर आपका बहुत अच्छा वर्क करता है वहां पर। देन यूट्यूब में अगेन यू कैन शेयर योर वीडियोज, और सिमिलरली हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही चीज होती है कि स्टार्टिंग के जो है ना, कि गेटिंग दो 1000, गेटिंग दोज 2000, बट देन दैट मल्टीप्लीकेशन इज क्वाइट फास्ट। एक बार आपका 1000 हो गया, 1000 और सब्सक्राइबर्स आने में यूट्यूब पे में भी आपको 3 to 4 मंथ लगे, बट फिर नेक्स्ट 1000 के लिए भी वही टाइम लगने वाला नहीं है। व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ नेक्स्ट 1000, मे बी आपको 1 मंथ में ही नेक्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स मिल जाए। एज योर सब्सक्राइबर
कीप ग्रोइंग, आपका विजिबिलिटी उतना ही ज़्यादा मतलब लाइक इंक्रीज होता जाता है. सो समवन हु इज अ सीए, or like there are others also like life coach or something. YouTube पर आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे कंटेंट, उतना ही ज़्यादा आपको वहाँ से विजिबिलिटी मिलती जाएगी. और यूट्यूब पर आजकल पॉडकास्ट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. अगर पॉडकास्ट आप कर रहे हो, इंटरव्यूज दे रहे हो टू द अदर पीपल. और हर बार क्या होता है कि इंटरव्यू के लिए मतलब somebody इज इनवाइटिंग यू और काइंड ऑफ थिंग, ये होता है. नहीं, इस तरीके से भी नहीं है. यू जितना ज्यादा आप विजिबल हो, अवेलेबल हो, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कनेक्ट हैं, उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती जाएंगी. आप जितना ओपन हो उन अपॉर्चुनिटीज के लिए. इफ वी आर वेटिंग कि नहीं somebody हैव टू इनवाइट मी तभी मैं करूँगी, आप मिल रहे हो, आप बात कर रहे हो, तो कोई आपको कैजुअली बोल देगा कि ऐसे मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, इंटरव्यू करें क्या, या शुड वी हैव अ पॉडकास्ट ऑन दिस टॉपिक. तो आप कितना ओपन हो, आप कितना अवेलेबल हो, वो तभी आता है कि जब आप कॉन्टिन्यूसली इंगेज कर रहे हो. एंड कोरा इज ऑल्सो सिमिलरली, किसी ने यूज किया है इस प्लेटफॉर्म को और दे नो, मोस्टली क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रहता है. सो इफ देयर आर द क्वेश्चंस ऑन योर टॉपिक एंड आप कंटिन्यूसली आंसर कर रहे हो दोज को, तो आपको वहाँ वो एज एन एक्सपर्ट आप अपने आप को कर सकते हो स्टेब्लिश. Similarly comes for the WhatsApp business. I think all of us are using WhatsApp, but उसके WhatsApp के business को वर्जन जो है उसको यूज करते हैं, तो देर आर लॉट ऑफ other facilities available, like you in the catalog part you can add as a whatever the services you are giving. So like we have life coach and parenting coach. They can write whatever the services they are giving. Similarly comes for professionals. They can add in the catalog few of your flyers you can add. And what is the timing, like what is the time you are available, that also you can mention. So once you use that WhatsApp business, you will get lot of features. You can add on your Instagram, your Facebook. These links also you can add there. And on the Telegram, you are making any group, sharing content. So you want to create a community for yourself. So this journey starts once you are using any social media account, and then you thought, look, okay, I have 1,000 or 2,000 loyal following. These people are continuously engaging with my content. You can create a community, and then when you are selling anything, any service, out of that community, maybe of 2,000 people, 1,000 people, there are higher chances that they will avail your services. The online personal branding strategies are like social media best practices method, like what is the platform specific, which platforms you want to use. And if someone after this session, if you thought, okay, I want to be consistent, so you choose first one platform. Go by the platform wise strategy. First, I want to create my following on LinkedIn. Then these I will take help of these LinkedIn followers to go grow my Instagram as well. So because if we are trying in starting, we are trying to post on each and every platform, that can be time consuming, and if that is taking too much of time and you are not able to handle, there are higher chances that you will get demotivated, oh, that I'm not able to give time, and this is now becoming a lot of burden for me. So start with one platform. If you want to use LinkedIn, start with LinkedIn, and then after 2-3 months, you can think of now I want to use two platform at a time. So in my case, I'm using three platform. Twitter, I'm not using much. Telegram, I'm not using much because being not only posting but being active, engaging, and
show your presence. That takes time, and if we are handling our social media accounts by ourselves, then that may be lot of time consuming. If we have delegated that work to any digital agency or something, that in that case they have like a specific team for handle your platforms, and that in that case I think you can start using multiple platforms. But in starting, you yourself are doing, start with one platform, and frequency and content type आपका क्या रहने वाला है. फ्लायर्स से काफी अच्छी विजिबिलिटी मिलती है योर फ्लायर्स पे, क्योंकि आपका नाम, फोटो इज गोइंग. सो अर्लियर आई स्टॉप्ड इट, I think after December or something. Otherwise, I was posting daily flyers also. So I have given that service to the vendor. They are preparing flyer for myself, and I'm just posting like daily whatever the wishes, daily any event wishes or something. So that flyer I was posting. So that has also given me good visibility. Then creating an personal site, website, if you have that, so that is a good thing. Also blogging, you are writing on, so blogging you can do on LinkedIn. And whatever the content you are creating, that should be original content, and also sharing the relevant content, whatever is useful according to your profile. If you are sharing some irrelevant content, that may not give you that much benefit, and it will be a time wastage for you, maybe. And often offline personal branding, that also we have discussed. If you are going into any networking events, try to meet maximum people you can meet. Share your card. Always carry your card with yourself, because what happens, I met with because I have that thing with me. I try to share my card, and many people are not holding their card. They are like, right now I don't have my card, kind of thing. So try to have your card with yourself always in your purse. So whenever recently I went for this one test, and there is one lady, she was into this clothes business or something. So it started with my sari. The conversation started with it, and it is like, what you are doing. So I said, I'm a CA. So she said, can you give me your card? We are looking for the CA services or something, we can connect with you. And I was having my card, and okay, okay, you take this card. So in that way, if you are like, if I have different parts, I keep my cards there, because whatever what the cost is takes, I think 200 or 300 rupees for 100 cards. So if you are putting 100 cards, maybe 50 cards in each of your bag, and that one card can create a business of 10,000, 20,000, then the cost is quite minor cost, no? So in that case, if that lady asks, and if I say, I don't have my card or something, you take my number, that may not look that professional, but I'm sharing my card there. That gives a different kind of effect. And if any day she will be looking for a CA, maybe chances that she will reach out to me. Maybe not 100% she is giving me work, but maybe the chances. So when the opportunity knocks, you should be available. And joining organization, there are a lot of most of us are attends ICI events. That is very good thing. But other than ICI, lot of other organizations like Rotary clubs, Lions Club, uh, BCS, so these are also conducting events. If you are going in those events, you are meeting with people who are not chartered accountants, and there are chances of getting work are more, because they are doing business, and they maybe in different, there are advocates or other professionals. So there can be opportunity of getting work more, rather than connecting only with the CAs, because in case of CAs, there can be delegation of work or assignment. May be one of the thing, but you are meeting with the businessmen. So there are chances you can get direct work from the businessman. So there is a lot of chamber of commerce, like here in Mumbai, there is Bombay Chamber of Commerce. So you are small, medium enterprises, chamber of commerce, SME, that is it. So lot of business. So you come to know once you started connecting, then these things started unfolding. And
from that you can create a network other than just of professionals, from the businessmen, from the other professional, with the advocate, with the CS, with the CMAs. So if you are connecting with the CS, so then also there can be a work sharing for both of us, for CA or CS. And like in once we start talking on any topic, you become thought leader on that topic, and you started holding authority, and someone is looking for that person, तो definitely वो आपके पास reach out करेंगे. Like from the last like from the one hour I'm talking about personal branding. So maybe जब भी किसी को होगा तो they can connect, क्योंकि हम पूनम से बात कर सकते हैं. तो I don't want, I'm not giving that service, but if someone who wants to create themselves in personal branding, or they want to create that service, तो वहाँ जितना ज्यादा वो बात करते रहेंगे उस टॉपिक पे, तो उनका ऑटोमेटिकली उस फील्ड में एक आपका एक्सपर्टीज हो जाता है. तो जितना ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग असाइनमेंट्स आप लोगे, एज ए स्पीकर वर्कशॉप्स ज्वाइन करोगे, कम्युनिटीज में इन्वॉल्व करोगे, क्योंकि लॉट ऑफ होता है जो कि एनजीओज हैं, सोशल वर्क होता है. जैसे मैं एक भारत विकास परिषद है, आई एम पार्ट ऑफ देयर ऑल्सो, तो दे आर डूइंग नॉन कॉमर्शियल वर्क, सोशल वर्क है, लेकिन वहाँ भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है नेटवर्क करने की, कनेक्ट करने की. सो ये असाइनमेंट्स जो भी होते हैं जो कि नॉन कॉमर्शियल हैं, वहाँ पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो. वॉलंटियरिंग वर्क करने से भी आपका एक नेटवर्क और विजिबिलिटी आपकी क्रिएट होती है. बाकी रिमेनिंग इज लाइक कि लोकल नेटवर्क ग्रुप्स काफी क्रिएट होते हैं. देयर इज लॉट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स लोकल, they're like Kharghar group, even on the Facebook or LinkedIn. Like I reside in Kharghar, so there are different groups of my city only on Facebook or on WhatsApp. Kharghar women's group, Kharghar small business group. So I can join these WhatsApp groups, and through that also I'm getting this visibility. So it's 5 p.m. and I'm just summarizing. And can we extend for 5 or 10 minutes, Kalpana? Yes, sure, Poonam. And we are having few questions as well. So I think we will need 5-10 minutes for 5-10 minutes for the questions as well. So we are almost about to complete also. So these are the tools you can use for your social media. Canva is a platform. You can create your flyers and all for this digital printing. You can use it. Linktree, you can add all your LinkedIn, all your social media links, and post in one this. And in that case, you can search all these things on the Google. You will come to know more about it. But these are the tools which will help you in social media journey. And then a content calendar, ChatGPT can help you in creating your content calendar. Also the Google Keep. Google Keep is a platform through this, you can keep your essentials here in the digital form. So what I do, I save my visiting card here, I want to take review on my profile. So those important links which I just want to share people fast, otherwise I have to search or something. So here in Google Keep, these kind of links, your files, your these photos, you can save in Google Keep. LinkedIn, we can talk later about the networking also. One thing I want to talk about the social media etiquette. So ask versus demand, lot of DMs. I think you people might be getting who are on social media. There is not the courtesy of asking. They are demanding. The thought of कि आपको करना ही पड़ेगा. So whenever you are asking favor, be humble. Be that kind of person. Okay, this person is not responsible for us to do something. So be that humble in asking. You are not demanding with them, and do not share too much personal information, because and right now
being this cyber frauds and all. You might have heard about the cases also. People are posting they are traveling to somewhere, and because of that, then the theft is happening, or kind of things can happen. So cyber frauds or attacks are happening. So don't share too much or of your personal information. Be cautious with the links you're getting on your email. So think twice, don't be in hurry. Recently one fraud happened. Someone shared ki these are our old events pics, and you can get our childhood pics from here, and in this way lot of friends accounts were hacked. So don't be in hurry, think twice before clicking on any link. And if that link is coming from someone you don't know, then be cautious about this. Maintain professionalism. Like don't be too much friendly or something. Many females don't want to be on social media because they think we might have some bad experiences there or something. So it's not the case कि अगर हमारा कोई एक्सपीरियंस खराब हुआ है तो उसकी वजह से हम खुद को वहां उस प्लेस से विड्रॉ करें कि वो प्लेस ही खराब है। आप बहुत क्लियरली आपकी बाउंड्रीज सेट करो कि दिस इज समथिंग लाइक, इन माय केस मेरे फेसबुक पे बहुत डीएम्स रहते हैं, हेलो हाय, सो आई डोंट रिप्लाई देम अंटिल देयर इज समथिंग, ओके हेलो पूनम, दिस इज समथिंग आई वांट टू कनेक्ट यू फॉर, देयर इज अ मैसेज ऑफ, देन आई आंसर। इफ देयर इज समथिंग हाय, सो आई डोंट थिंक कि मुझे वो रिप्लाई करना चाहिए। तो जो पर्सन वो हाय हेलो भेज भी रहे हैं, यू शुड बी प्रोफेशनल इनफ टू सेंड कि आप किस लिए कनेक्ट करना चाह रहे हो, आपके मैसेजेस क्या है। बट अगर बिकॉज ऑफ दिस थिंग यार मेरे डीएम्स में बहुत इस तरीके का कंटेंट या मैसेज आ रहा है और मैं छोड़ दूँ, लाइक आई स्टॉप यूजिंग द सोशल मीडिया, तो कहीं ना कहीं मैं मेरे खुद के लिए नुकसान कर रही हूँ, या मैं खुद के राइट्स जो है उनको वायलेट कर रही हूँ। मैं अपने लिए वो काम नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पे जाके मुझे परेशानी होगी। तो मेरा फ्लायर्स जब जाते थे तो उसमें मेरा नंबर भी है, आई एम फोन नंबर। सो फ्यू पीपल दे टेक नंबर एंड मतलब लाइक दैट इज द ऑफिस नंबर। तो ऑफिस नंबर पे मैसेज भेजेंगे कि वी वो क्वेरीज भेज देंगे कि जीएसटी का मेरा ये क्वेरी चल रहा है, या ये मेरा इस टाइप का कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो वहां पर भी बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस को आएंगे, या फिर आज का आपका फोटो अच्छा था, आपका ये फ्लायर अच्छा था, तो दे कैन रीच आउट टू दैट एक्सटेंट, नॉट ओनली द डीएम बट वो नंबर से लेके व्हाट्सएप पर भी आएंगे। सो देन दैट आई हैव टू सेट अ क्लियर बाउंड्रीज कि इनको मुझे आंसर नहीं करना है अंटिल देर इज वन मैसेज, मैं इसको अनआंसर छोड़ सकती हूँ। कॉन्टिन्यूसली 3 4 5 बार ऐसा मैसेज आ रहा है, आई विल प्रेफर टू ब्लॉक दैट पर्सन और लाइफ में आगे बढ़ जाना है। बिकॉज कि उससे परेशान हो जाने कि अरे ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि आप एक बार सोशल मीडिया पे जाते हो ऐसा करते हो तो मे बी उसके कुछ ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। बट वी हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम्स विद सेटिंग अवर क्लियर बाउंड्रीज एंड बीइंग प्रोफेशनल। वी कैन गो हैड, इतना मतलब बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस वजह से कभी भी किसी भी सिचुएशंस में खुद को रोकना इज नॉट अ सॉल्यूशन। देन बीइंग माइंडफुल कि वॉट एवर यू आर शेयरिंग, इससे आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो माइंडफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भी आप पोस्ट कर रहे हो वो फिर बाकी लोगों तक पहुंचने वाला है, मतलब जो भी लोग आपके साथ में कनेक्टेड हैं। तो बहुत बार ये होता है कि आई हैव टेकन 2 फोन्स ऑल्सो, मतलब कि मेरा प्रोफेशनल जो फोन है वो डिफरेंट है, क्लाइंट्स के मोस्टली नंबर्स जो है वो मेरे प्रोफेशनल फोन पर ही है, मेरे पर्सनल फोन पे बहुत कम है। इवन अगर मैं मेरा पर्सनल कोई स्टेटस लगा रही हूँ व्हाट्सएप पर, तो आई ट्राई टू चूज दैट ऑप्शन और एक्सेप्ट में डालती हूँ मेरे क्लाइंट्स या प्रोफेशनल जो भी कंटेंट कनेक्ट्स हैं जिनको मैं मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहती हूँ, तो आई चूज दैट ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग द एक्सेप्ट। उनको वो मेरा स्टेटस शो नहीं होना चाहिए। सो वी कैन बी लिटिल बिट ऑफ माइंडफुल अबाउट दीज थिंग्स जब भी हम यूज कर रहे हैं। नाउ वी कैन टेक द क्वेश्चंस। एज यू टॉक अबाउट दी मल्टीपल टॉपिक्स कि हम अगर मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में हमको सोशल मीडिया पे डालना है पोस्ट, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है तनाज का कि Yes. when you had multiple topics to speak, did not it will not confuse the audience because she also wants to have many buckets and
little bit struggling about that. ओके सो जब ये टॉपिक के बारे में मैं भी सोच रही थी, तो मेरे सामने एक जो एग्जांपल है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का, दैट इज अंकुर वरीको। क्योंकि अंकुर वरीको की जब आप प्रोफाइल देखते हो, वो फाइनेंसिस के बारे में भी बात करते हैं, है ना, लाइफ के बारे में भी बात करते हैं, फिटनेस पर भी बात करते हैं, और He talks about the various topics. I have seen. so he's talking. So what image that thing is creating in her speaking also. He's running that webinar on the public speaking, LinkedIn usage, social media usage के भी उनके classes आते हैं। उन्होंने जो books लिखी हैं वो personal experiences पे हैं। So is that confusing you about his image, or what image you are having about him? Tanas, can you unmute yourself and ask? Sure. Hi, Poonam ji. So, the problem is like I am an energy healer and life coach. Okay, so mainstream is this, but however, my content, like the most authentic content is I am into fitness, dance, yoga, and I talk about communication and lifestyle. So the most easy content which comes to me is dance, where I'm in the most high energy, where people will directly connect. But when I put and also I've put dance reels where the reach was highest, but somewhere I'm feeling that some people are thinking it is just as a dance. So that thought is like resisting me to create more such reels. Uh, So there I'm resisting and I'm only sharing about healing. So then not able to reach the target audience where I know the transformation is there only. So how yes. you handle this? So for this, because dancing is a great healing practice, so that is somewhere is part of your profile only, because dancing is not different with the like Correct. जितना मैंने जाना है वो ये है कि Yeah, it's therapy. इमोशंस के साथ जो डील करना Hmm. है, तो इफ यू आर डांसिंग आप बहुत सारे इमोशंस को रिलीज कर देते हो जो कि Correct. निगेटिवली स्टक है आपके बॉडी में। Correct. दैट इज समवेयर इज पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल ओनली, क्योंकि आप हीलर का अगर बात करते हो तो उसी का एक मेथड है हीलिंग का, डांसिंग, दैट इज Hmm. नॉट अ डिफरेंट थिंग। Hmm. Hmm. एंड क्योंकि आप रजिस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके नियर बाई जो लोग रहेंगे मे बी वो जजमेंट्स उनका हो सकता है या इस तरीके से, तो वो पॉइंट लाइक आई एम सी एंड आई ऑल्सो लाइक डांसिंग। मैं पहले मेरे काफी रील्स पोस्ट करती थी डांसिंग के, माई विद माई डॉटर, तो वो पेरेंटिंग और डांसिंग दोनों का मिक्सअप होता था, बिकॉज माई डॉटर इज ऑल्सो देयर और मैं फिटनेस में हूँ, तो Hmm. डांस बिकम द पार्ट ऑफ फिटनेस। But when I came into the public life where I'm a committee member, or I'm holding a post there, then I have to uh, not post my dancing videos publicly, because once you are a leader, then people are looking from different perspectives. So if Modi ji, he's posting a dance Hmm. video, so that may affect his image Credibility. as a Hmm. leader. Yeah. So that time I restricted it. I did not stop, but I restricted कि Yes. ये मुझे किसको दिखाना है और कहाँ तक लेके जाना है। जहां पर भी मैं एज ए लीडर के लोग मुझे देखते हैं, तो मैं लिंक्डइन है मेरा, फेसबुक पर मैंने पहले कुछ किया था, एंड देन आई एम नॉट पोस्टिंग ऑन फेसबुक और समथिंग, क्योंकि वो मेरा प्लेटफॉर्म जो पहले सिर्फ पर्सनल था, 1000 लोग थे, आज 10,000 लोग कनेक्ट हो चुके हैं, तो आई have to restrict few of the things to do. Hmm. So you need to think from that perspective कि आई एम अ हीलर और मेरे ये हीलिंग का ही एक पार्ट है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूं एज ए हीलिंग के Like पार्ट। merging kind of. So, just I'll ask one thing because you are into NLP also. So, suppose if I'm coming up with a masterclass where it says movement in the morning for 20 minutes, it is combined with journal or gratitude, like journaling prompts and some activities. How would you feel as an audience to go through that experience? Would you enjoy? आई थिंक डेफिनेटली वी विल एंजॉय दिस, क्योंकि हम Okay. लोग Because so there are two approach because you're also talking about branding. Now, what would you suggest? Having two pages, like one page completely for dance entertainment, because mine is dance. Also forgot to say that singing and with ukulele, I just went on live one day, Insta live, and I was engaging with the audience more. So I combined my art and skill along with questioning.
So here, do you suggest having 2 pages or combining everything in one page? 2 pages will be hectic for you to manage, what I believe, क्योंकि आपको भी आंसर्स करना है, क्वेश्चंस आंसर्स में लाइक इंगेज भी होना है ना, तो वो आई थिंक आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। आप एक पेज में ही करो, बट उसको ना रिप्रेजेंट ऐसे करो कि इसका ही पार्ट है। Okay, got हाँ, जो भी आप पोस्ट कर रहे हो आपके सोशल मीडिया पे, रिप्रेजेंटिंग इट कि दिस इज द पार्ट ऑफ योर हीलिंग जर्नी एज वेल। और उसमें से आप जितना ज्यादा एग्जाम्पल शेयर करोगे कि आपके क्लाइंट्स की लाइफ में क्या चेंजेस हुए, ऑल्सो स्टोरीज को जितना आप शेयर करोगे, वो लोगों की लाइफ में बहुत इंस्पायर करेगा कि अच्छा इस पर्सन को हेल्प मिला है, तो देन वी कैन रीच आउट टू तनाज। awesome, awesome. Thank you. वेलकम। Sunita ji, you raise your hand, so you Yeah. can ask. Thank you. So, Poonam, I have a question with regard to chartered accountants and the amount of information that they can share uh, regarding selling, promoting themselves, looking into considering the ethical boundaries that we have to stay within if you are a practicing chartered accountant. To what extent can you share and how should you share? We cannot advertise openly, right? Right. So, what Right. are the limits or the boundaries within which we can ethically use LinkedIn and canvassing or promoting ourselves? So, being a practicing chartered accountant, code of ethics are applicable on us, and जो schedule 5, 6 advertisement के लिए बात करते हैं, and then there is a method of pull method and push method. So बस आप एक pull method और push method को social media पे understand कर लीजिए, and lot of things are solved. बिकॉज एक तो क्या है कि आप कहीं पर भी ना पुश मेथड से किसी को कुछ नहीं भेज रहे हो, यू आर पोस्टिंग ऑन योर सोशल मीडिया एंड लोग आके उसको खुद इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं। ओके, आप लाइक जो एक चीज हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ लोग पोस्ट करते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर दिस वर्क और समथिंग। सो वो एक मेथड गलत है, बिकॉज कहीं पर भी आस्किंग फॉर वर्क, आप आपके कलीग से यू कैन आस्क फॉर वर्क directly, but on the email or something, posting in the social media, like you can do everything, but how you are doing it, that becomes the important in code of ethics. So pull and push method, you are posting things, even the link tree which is containing your social media links, you are not sending anybody, you have put that on your status or somewhere, people are going there, clicking there, and they are getting the information. So it is in the pull method. Okay. Another So, thing coming, sorry, just one more question related to it. So, can I say that you can connect to avail my services? That I've seen a lot of people who are saying that connect, to your you said connect privately DM to avail services. how you So, are is it? saying, how you are saying that becomes important. You just say कि you connect with me. Oh. You are not saying कि connect with me for to avail my service or something. You say कि if you have any doubt, you can connect with me. So for sharing knowledge, there is no restrictions. You can talk, you can share your knowledge, and you can speak on that subject. There is no restrictions. You can put your email ID also. कि like if somebody has any query, they can send me mail. And Right. when you're talking one to one, then you can definitely how you are going towards your work. There is no restrictions. So you are going on social media, talking about any topic, and asking them to connect me. There's no such as such restrictions, क्योंकि आप काम का बात ही नहीं कर रहे हो. You are not saying कि आप मेरे से काम लो, मेरे सर्विस लो. You are not talking. You are like कि मैं ये नॉलेज शेयर कर रही हूँ, इस नॉलेज से रिलेटेड कोई क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो. So one more question regarding your the fact when you mentioned that you should have your business cards. So these days you have the LinkedIn barcode that you can share. So how effective do you think, or do you think this is something that we can do that just for share your LinkedIn barcode and not carry your business cards and all? Is it prevalent in our community? And you know, I'm still what I have seen that cards still give that one added benefit to you, like लोगों के वो पर्स में है, वो देख रहे हैं, so और जब वो आप शेयर करते हो किसी को कार्ड, तो एक जो इमेज आ रही है वो physical touch. लोगों के माइंड में वो प्रेजेंटेशन है,
फोन में सेव करेंगे डायरेक्टली, बट वो क्योंकि बहुत बार लाइक आई आई हैव मोर देन 5,000 कॉन्टैक्ट, और मुझे याद ही नहीं कि कॉन्टैक्ट मैंने कब सेव किया था। देन आई डिलीटेड फ्यू कॉन्टैक्ट, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आ रहा है, बिकॉज आई हैव नॉट रिटन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो कि क्या था। बट मेरे जो कार्ड्स फिल हैं, जो मेरे पास है, तो उसमें मैं गो थ्रू जरूर करती हूँ जब भी मुझे लाइक आई हैव एनीथिंग लाइक इफ आई करी आई वांट टू शेयर ऑल्सो, लाइक मेरे जो कार्ड्स के फोल्डर्स हैं, मैंने अभी तक मैं जो लोगों से मिली थी, आई वांट टू शो, ये मेरे कार्ड्स होल्डर्स हैं, and this one. So these are the cards I have met with people, I have collected in the this card holder. और कभी मुझे जरूरत होती है तो मैं एक बार गो थ्रो करके, जैसे लाइक ये मेरा कार्ड होल्डर है, तो आई गो थ्रो कि अरे मैं कितने लोगों से अभी तक मिली हूँ, क्या है, तो एक बार गो थ्रो उस चीज को कर लेती हूँ। बट तो वो एक डिटेल भी आ जाती है कि अच्छा ये पर्सन, उसका एड्रेस है, नंबर है, कि याद आ जाता है। और वो जो कांटेक्ट मेरे फोन में सेव है, आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि मैंने कांटेक्ट सेव कब किया था क्योंकि मे बी पता नहीं कब मिली थी। और देन आई स्टार्टेड राइटिंग कि ये पर्सन से मैं कब किस इवेंट में मिली हूँ एंड हु इंट्रोड्यूस्ड मी, वो भी थोड़ा मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। बट दैट आई डिड लेटर ऑन। स्टार्टिंग में जो जब भी आई वाज नॉट दैट मच हैविंग एक्सपीरियंस और समथिंग, मैंने ऐड कर लेती थी, सेव कर लेती, आई थिंक कि थोड़े से ही नंबर है, याद रहेंगे। बट आफ्टर 500 600 वो नंबर्स को याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है। Thank you. Kalpana ji, you want to share something? Yes, so recently to this visiting card, Sunita, I will share my own experience. So, my first big event I have attended with Poonam in Bangalore, the startup sphere. So at that point of time, the cards I have collected, I have not saved it, but this time I have all of them together, but I haven't bought that folder with me. What I want to add here, Sunita, is uh, in WOFA, I met close to 200 professionals, 200 to 300, and I'm having visiting card of all of them, literally all of them. So that barcode system, as rightly Poonam has mentioned, अभी उतना चलन में नहीं आया है अभी तक in India. That is the phenomena we carry our card, and as rightly mentioned, so few things I'm going to do implement right away from this session is I was having my visiting card, but सारे bags में नहीं रखा था. So after today's session, I'll keep my card of my practice and this sort of influence in all the card, and I'm going to buy this visiting card holder right away. The question I would like to ask Poonam, the answer which you have given to the question of Tanaz, you have given the example of Ankur Warikoo. Sometime this question comes into my mind also, and most of the time we believe that as a content creator, कभी ना कभी being into profession ये आ जाता है कि किस पे बात करें, ये भी लग रहा है बात करने के लिए, ये भी बात करने के लिए लग रहा है. तो the example of Ankur Warikoo, क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि ही मस्ट हैव रीच अ पॉइंट ऑफ पॉपुलैरिटी, देन जब ऐसा होता है ना कि व्हेन वी रीच टू अ सर्टेन लेवल एंड आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम किसी भी मैटर पे बात करें, पीपल विल लिसन बिकॉज वी गेन दैट क्रेडिबिलिटी through our experience and the hard work in our journey. So what is your take in that? Means someone, just take example of mine. If right now I'm into public speaking, I help people on communication skill, and together with that I will also start speaking on let's take an example of ROC, Ministry of Corporate Affairs matter, because in my practice I do that as well. So will that be a right thing to do? So extended leg to a question, my perspective, I would like to hear your thought on that. Yes. So in starting मतलब like this can be a thought कि लोग confused तो नहीं हो जाएंगे what I am doing, who I am, if I am new to these platforms. But कैसे होता है कि like अंकुर का भी when I have seen his ads on the this public speaking नहीं time management का कोई तो भी webinars था, and उसके थ्रू मैं उनको देखा था. उसके बाद लाइक ही वॉज अ एंटरप्रेन्योर, लाइक सोशल मीडिया तो उन्होंने बाद में किया, ही बिल्ड अ नेट नियर बाई. अभी नियर बाई जब तक बिल्ड किया था लोग उनको नहीं जानते थे. ही
not that much active on social media. उसके बाद जब उन्होंने बात करनी शुरू की है, अगर किसी का भी बाहर की जर्नी देखनी है, तो मैं क्या करती हूँ, आई स्क्रॉल देयर पेजेस, यूट्यूब को स्क्रॉल कर लूंगी। मुझे किसी की जर्नी को समझना है कि ये पर्सन इस स्टेज तक आज आया है, या इस प्लेटफॉर्म तक आज यहाँ तक है, क्या किया था इसने, हाउ ही हैज डन, तो मैं वो एक रिसर्च करती हूँ। तो जब उस रिसर्च को आप देखोगे, वहां पे देखोगे, तो वो तब से ही, जब से वो सोशल मीडिया में आए, आई थिंक तब से ही वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते, ऐसा नहीं था कि 1 ईयर दे के एक क्रिएट किया है एंड देन फिर बात करनी शुरू की है। और उनको मतलब जो लोग जानते हैं वो ये आई थिंक 3-4 ईयर्स इससे ही वो एक्टिव हुए हैं या जानना शुरू करे हैं। तो ऐसे क्या होता है कि हम जब इन्फ्लुएंसर्स की जर्नी को देखते हैं ना, उनकी जर्नी पर रिसर्च करते हैं, तो वहां से बहुत लर्निंग मिलती है। किसी भी अपने जैसे सीए कम्युनिटी में है, आप रचना रनाडे मैडम है, और जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके पेजेस को एक बार स्क्रॉल करोगे ना, तो बहुत इंसाइट मिल जाएगा कि हाउ दे हैव built up. We can have multiple topic and mixed content, but post according to a calendar. हाँ राइट, टॉपिक कैलेंडर आपका बना सकते हो। और सिमिलरली आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, बिकॉज मैं भी डिफरेंट टॉपिक्स पे ही बात करती हूँ। जब मैं मेरी प्रोफाइल का सोचा था ना, एंड आई सेट विद द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उनके साथ मैं बैठी थी, सेट की मैडम क्या करना है आपको, कैसा बनना है, साक्षी जैन बनना है आपको, रचना मैडम बनना है आपको, अंकुर वारिक बनना है, लाइक क्या बनना है आपको, व्हाट इज योर थॉट। और हमारा बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ था इस टॉपिक पे। मैंने बोला कि नहीं, मैं सिर्फ फाइनेंस पे तो बात नहीं कर सकती, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन मुझे पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं बुक्स बहुत रीड करती हूँ, एंड इफ आई रीडिंग टू मच, आई एम कंज्यूमिंग लॉट ऑफ, तो मैं बात करूंगी इस टॉपिक पे। इफ आई एम सोशल मीडिया एंथुजियास्ट, मुझे पसंद है करना, तो मैं बात करूंगी इस टॉपिक पे, बिकॉज इट डज नेवर स्टॉप्स देयर ओनली कंज्यूमिंग से। स्लोली आप उसके बारे में बात करना, जब बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो आप बात करना उसके बारे में करते ही हो जनरली। सो देन आई ब्रेन स्टॉर्म एंड आई थॉट कि नहीं, मैं एक टॉपिक पे तो बात नहीं करती हूँ। तो देन दे पीपल आर लाइक कि देन यू कैन हैव लॉट ऑफ टॉपिक्स, ऐसा नहीं है कि इट इज रिस्ट्रिक्टिंग, या लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये तो पब्लिक स्पीकिंग पर भी बात कर रहे हैं और आरओसी का कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। यू कैन मेंटेन, बट आप जिसको भी ज्यादा शेयर करोगे, वो प्रोफाइल आपका इमेज ज्यादा क्रिएट होगा। इफ कल्पना यू आर टॉकिंग मच अबाउट द पब्लिक स्पीकिंग देन द आरओसी, तो आपको लोग पब्लिक स्पीकिंग से ज्यादा जानेंगे रादर देन योर द वर्क यू आर डूइंग इन द कंपनी लॉ। if there is a balanced, if there is a ratio, so उसके अकॉर्डिंग आपका विजिबिलिटी उस प्रोफाइल में ज्यादा आएगा। सो Yes. दैट यू हैव टू डिसाइड कि विच एरिया में मुझे ज्यादा अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। And Sarjini is also sharing in a similar line that I used to create my own pattern. Like on Friday, I'll talk about this. This means we will consider GST. Yes. हम्म, Or Sunday about casual, like 80-20 rule. So more in a long run, how I want to establish. yourself, and in Yes. that video you should be sharing the content. So while you are preparing your content calendar, so and I like shared here on the chat GPT, it is now becoming very easy. You write that I want to establish myself as a this company law compliance expert, as a public speaker coach, public speaking coach, and this, and suggest me what should be the frequency, on what days I should be posting, or what kind of post I should be posting. So they that will create a calendar. Yes. Thank you, Bhumi. In the nowadays in personal development field also, if you want to reach to this stage, so you have written about yourself. So one thing I want to share, like I use this diary for myself. Like people ask why, how you are managing these things, or how you are able to handle 2-3 roles, like you are practicing chartered accountant also. So I have this diary and I keep this with me. And here I, like it is mentioned ki what is your goals, like in personal, because one, until you are not balanced spiritually, personally, financially, so what are your goals, if you can see, so it is written here: personal, financial, spiritual. So for whole year, when the year starts, I made this in
Feb last or something. In January, I was busy, so I could not make it. So in Feb only, for the whole year, I have written what year I want it to be, how it should look, what is my strategies, what in this year, in 2025, where I will be spending my time more, and what situation, what kind of people I need to avoid, what are the habits I need to break, and there is a vision board. So I have written that I want to, in 2025, I wanted to be known as a corporate law FEMA posh NRI expert. Few of the things I want to remove from my profile. So professionally in this way in 2025. So then I will be sharing more content on these topics. So I will give the chat GPT, okay, this is something I want to do, this much amount I want to earn for myself, and these are my some financial goal. I want to buy this, I want to upgrade my some of the financial things. I want to study also further. So I have what the course I want to do. So everything I have written in starting of the year only. So I am clear about the 2025, how I want to be something, have something in 2025. So if you are putting that to chat GPT, it will give you more clarity कि okay ये तो आपको करना है, आप कैसे करोगे, तो वो आपको बहुत अच्छी clarity देगा. Thank you. So participants, any of the participants are having any question, they can ask. Otherwise, we are good to conclude our today's session. It is a topic on which the discussion will never end, but we will have to conclude today's session. Okay. So first, now we would like to present the appreciation certificate to our co-founder and speaker, Poonam Pathak. So just give me a second to share my screen. Thank you so much, Poonam. So it was a long pending session. Thank you so much for giving me. And thank you so much for your time, for enlightening us and giving your valuable time and insight sharing on our platform. I'm Now sure. I would like to invite CA Sunita Rathore, our core member, to give formal vote of thanks. So over to you, Sunita. Thank you so much. The session itself, though we extended it, but none of us became aware of the time that it has taken, because we are so engrossed in how you've shared and the kind of content that you've shared with us, CA Poonam Pathak. And thank you so much for taking the time out and actually giving us a heart-to-heart connect on how to take our journey forward. And you've answered, I think everyone will agree with me that you've answered the questions that have been at the back of our minds, and somewhere we have been hesitant to take that step forward. And it was such a enriching and contentful session. I still have plenty of questions that I want to ask from you, and we are definitely surely going to ask you to spare time in a next session for the LinkedIn thing. So that that is something that we really want insights on. And it was a dialogue, and that comfort level that you gave, it broke the hesitation of asking a question also, that is it something that I can ask or not ask, and that kind of camaraderie that you built was phenomenal. Thank you so much, and we wish you all the best, and we hope that you keep coming and gracing our stage and our sessions here on. Thank you so much. Thank you to the audience who have patiently been sitting and engaging, and thank you to the core team members who make this possible. You all have a great weekend ahead and a lovely day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you to our core member,
CA Harshali Salvi, CA Sunita Rathod, and CA Aishwarya, who is not able to join today, CA Gunjan, CA Jyoti. And I will mention it again that whenever the vote of thanks done by our CA Sunita Rathod, it's like adding the right amount of sweetness to conclude the session with your melodious voice. Thank you, thank you, thank you, thank you once again, Poonam. And so यहीं से आगाज हो गई that you have to come up with a customized session on LinkedIn, and the session is recorded. So you have to. So we will reach out to you that when is the next you are spending time with us, and yes, we have to have your session on Posh as well. Definitely, we will be talking about this session and we will be engaging like this only when we are engaging and we all are like talking about any subject, that the cumulative energy that creates a different kind of aura. Yes. Definitely. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.